Good morning. Welcome to Vedang Civil Service powered by Vedang Institute of Technology. तो जमती आपण माने जानछंती हम जो क्लास अछि प्रशासक बैच सेथिरे आपण मानकर जेतिकी आपण मानकर YouTube रे क्लासेस अवेलेबल होची से सब गुडा के क्लासेस आपण मानकर कोन पय ना मेंस पय जोटी आपण मानकर हबा को जाउची अक्टोबर रे हैला तो तार पेड बैच भी अछि जोटा कि आपण मानकर देखुथिबे एठी ता ना होची कोन ना सुशासक पेड बैच जोटा अछि ता ना होची सुशासक बैच पिला माने जोटा कि आपण मानकर क्लास होची सबुदिन आपण मानकर मेंस ओरिएंटेड मोर क्लासेस रोची इकोनॉमिक्स आउ हैला आपण मानकर एथिक्स से भाई भाव आपण मानकर चंदन सारंगर भी क्लास अच्छी आपण मानकर समस्त क्लास अच्छी तो से जो क्लासेस गुड़ाक आपण मानकर देखिए मैडम नौ साइंस आउ टेक आपण मानकर केडी सर नौ हिस्ट्री पॉलिटी एंड गवर्नेंस पेड क्लास रे चंदन सर आपण मानकर सोशल जस्टिस सोशल इश्यूज ज्योग्राफी नेबे तापर आपण मानकर ले शिशिर सर आपण मानकर जो पेपर सीट बाकी जहा रहले डिजास्टर मैनेजमेंट इंटरनल सिक्योरिटी ता सहित आपण मानकर जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बायोडायवर्सिटी से सब जिन शिशिर सर नेबे आ मु तो आपण मानकर जानिथिबे एथिक्स आउ इकोनॉमिक्स आपण मानकर न होची तो क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट ही सारलानी जो माने इंटरेस्टेड अच्छो जॉइन करिया पय से माने जॉइन कर परिबो प्राइस देखो पिला माने बहुत कम अछि 3499 आपण मानकर प्राइस अछि आउ जदि आपण माने मो कोड यूज करचंदी व्हिच इज ADG10 ताल आपण को 10% रो डिस्काउंट भी आसीबो ओके 10% रो आपण को डिस्काउंट भी मिलिबो बुझ पाइले कि नहीं तो समस्ते गुड मॉर्निंग लोपा समस्ते ट्राई करो कि आपण माने क्लास को जॉइन करिया पाएगा पढ़िया पाएगा जो माने इंटरेस्ट अच्छो जो माने सिविल सर्विस को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अच्छो से माने क्लासेस को जॉइन करो ओके चलो तो आज जमती आपण मानकर क्लासेस अछि जोडे कि आपण मानकर एथिक्स रो क्लासेस अछि तो एथिक्स रे आमे कोन कोन सब जानिबा कोन कोन सब क्वेश्चन आज म आपण मान बंगा आनी छी जाका मेठी डिस्कशन करिबा तो जो माननकु एथिक्स रो क्लासेस भल लागुची बा जो माननकु इंटरेस्ट लागुची बा जो मान भाबुच कि एठी आपण मानकर जॉइन हले आपण मानकर एथिक्स पेपर रे बेटर रिजल्ट हे पारिबो से माने समस्त आपण माने पेड क्लास हमरो जॉइन कर परिबे तो ऑलरेडी मु कहि सारची समस्त टिके वेदांत क्लासेस रो जो ऐप अछि से ऐप रे जानतु कोन कोन क्लासेस अवेलेबल अछि से सब क्लासेस पिला माने देखो राइट आ गोटे जिंस कि जदी apart from this any other lecture you are needed or any other topic you wanted to be discussed on YouTube then try to give comment box अछि ना तो comment समस्त दियंतु कि कोन कोन आपण चाहउचंती को जिंस आपण चाहउचंती को जिंस आपण मानकु पढ़ा हबो को चैप्टर आपण माने चाहउचंती ताको आपण चाहउचंती कि बहुत डिटेल डिस्कशन हो बा कोन इनोवेटिव आपण चाहउचंती सब जिंस आपण माने कमेंट रे लिखि परिबे ठीक अछि हम ट्राई करबो से सब जिंस आनिया पाएगा से सब क्लासेस आपण मानकु प्रोवाइड करबा पाए तापर आपण मानकर फर्स्ट क्वेश्चन देखो कोन अछि तो व्हाट इज मेंट बाय क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस हाउ डज इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द पॉलिसी डोमेन तो 2019 लो क्वेश्चन थिला सेकंड क्वेश्चन लाइक एक्सप्लेन हाउ ethics contribute to social well-being and peace cite examples from your own observations so basically 2021 लो क्वेश्चन अछि थर्ड अछि the current internet expansion has infused a set of cultural values which are often in conflict with traditional values discussed तो it is आपनकर 2020 रे आस्थिला just because कि कोविड आस्थिला कोविड टाइम रे internet was rapidly spreading all over the country everybody was using internet because schools and college educational institutions office everything got shut down during that time so how this internet things by internet how this going to even also impacted on the cultural values and which is really conflict with the traditional values which has been passed by our older generation to us right तो से तीनटे क्वेश्चन आपण मानकर अछि ता पूर्वरु देखो पिला माने जो माने क्लास मिस करिचो बा टोटली एथिक्स रो क्लास करिनो तो जो प्लेलिस्ट अछि आपण माने से क्लास आपण देखि परिबे बहुत सारा टॉपिक रे में कथा हैचंती अबाउट एटीट्यूड आगो को भी जाई कि हमें एटीट्यूड ऊपर आउरी कथा बा इमोशनल इंटेलिजेंस केस स्टडी भी हेची एई वीक रे जो भी क्लासेस हला इट्स अबाउट टू क्लासेस इज अबाउट ओनली अबाउट द थ्योरी पार्ट और क्वेश्चन डिस्कशन नेक्स्ट वीक रे जो क्लासेस रहबो दैट विल बी फॉर द केस स्टडीज
राइट तो आम एमती डिवाइड करके कर 1 वीक जब आम केस स्टडी कले 1 वीक आम केमती क्लासेस करूँ राइट तो समस्ते क्लासेस को जॉइन कर देख तुमको केमती लगुच कौन सजेशन हो पार क्या केमती आम बेटर वे रे कर इम्प्लीमेंट कौन कौन हवा दरकार से सब जिनस आम देखापी पड़ो ओके तो फास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करने पूर्व मु क्लासेस भी बहुत थर तुमको कही इवन कि पेड क्लासेस रे भी आपर यूट्यूब क्लासेस रे भी व्हाट इज मोरालिटी एंड व्हाट इज एथिक्स and how do morality differ from ethics. So basically ethics is something attached to the organization or to the society. If there is no society there will be no ethics, right? तो सोसाइटी रे जो भी नॉर्म्स जो भी प्रिंसिपल जो भी आपण मानकर प्रोवाइड करा है जैसे कि मोरल प्रिंसिपल टू गाइड इंडिविजुअल्स बाय ह्यूमन एक्शन तो ह्यूमन एक्शन को गाइड करने का सोसाइटी रे कौन कौन प्रोवाइड कराई राइट सोसाइटी कौन कौन प्रिंसिपल्स रखाई फॉर एग्जांपल जदि मु कहबी कि एथिक्स रे आपण मानकर कौन अछि ना सब बेले ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू अपहोल्ड हबा पई पड़ियो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू तो फास्ट ले कौन कि ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू आई मीन कि सपोज my principle or my personal belief is differ from the belief of the organization still I have to prefer the organization value because I'm working in this organization okay organization value रही जोटा कि प्रोफेशनलिज्म कहा होची फॉर एग्जांपल कि डॉक्टर अछंती तो डॉक्टर रो गोटे प्रोफेशनलिज्म अछि कि नॉट टू डिस्क्लोज all the details about his or her patient that is the credibility which is upon the doctors तो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज रहा फर्स्ट सेकेंड जिनस आपण मानकर कौन रहा इट विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव इन नेचर दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्मली equally it is going to be equal for every individuals like you are a lawyer and you have to defend suppose every defend lawyer they have to defend the accused that is their duty because they got that professions or they got that profession so my profession is to teach all the teachers they have some ethics toward the teaching profession itself I cannot be like discriminate between the two students I am not going to be romantically involved with any student this is what my obligation because I am a teacher this is what I have to follow right second जिनस आपण मानकर कोन आसिला ना एथि पई का आपण मानको पनिशमेंट अछि yes there is a punishment for this if I am breaching my professionalism if I am breaching the foundational or the value of my organization I am going to get the punishment that means I will lose my job I lose my profession I will lose my respect in the society obviously I'm going to lose my respect if I'm doing something beyond my profession I'm doing something which is not permissible for my profession right तो यही सब जिनस होची आपण मानकर एथिक्स अछि मोराल्स रे कोन अछि मोरालिटी रे कोन अछि मोरालिटी माने कोन ना एटा होची आपण मानकर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव इंडिविजुअल ओके इंडिविजुअली आपण मानकर कोन अछि कोन आपण मानकर वैल्यू सिस्टम अछि आपण मानकर कोन मोरल प्रिंसिपल्स अछि फॉर एग्जांपल even also ki you think like in your mind ki there should be same sex marriage basically I think in that way why there is not legalization of the same sex marriage I can understand there is some traditional values which is attached to our Hinduism or our culture to our religion but if when we are talking about modern society when we are talking about modern society when we are talking about constitution when we are talking about individualism when we are talking about equality gender equality so that time I should not consider about the traditions or the whatever the religion sentiments attached to these provisions or to this particular matter because I believe in my personal belief religion should be personal it should be personal choice and a person should maintain or do the religion belief by the personal sphere not bringing to the societal issues right so same sex marriage should be legalized in my perspective but it is not ethical even also it's not legal in our Indian society
देखो जदि आम कह कि सेम सेक्स मैरिज को आपण मैंने कौन लीगलाइज करना, दिस इज गोइंग बियॉन्ड द नेचर, दिस इज लाइक डिस्टर्बिंग द नेचर समथिंग लाइक दैट राइट. बट जिते आम डिवोर्स को ताले कौन लीगलाइज कले, when you understand that two people cannot stay together, then maybe two opposite gender may not stay together. This is what my point of view. It may differ from person to person. Second instance, like people often, like you will go to the village, they don't believe, they consider like abortion is a sin, abortion is a murder. But what if that child is born out of the rape? What if the child is born out of the abuse, right? तो सेही सब जिनस को हमको देखिया पे पड़िबो कि तमरो मोरालिटी कोन कोच, मोराल्स तमरो कोन अछि. यू हैव द मोरालिटी ऑफ जस्टिस, right? You have the morality of justice, you have the morality of equality. I believe in equality. Then why I am going to touch my teacher's feet? Because that person also a person. Okay, that is his or her profession to teach me, and I have also have my profession. So this is also going beyond our constitutional values. Constitution भी कहूँ equality, but फिर भी हमें culturally कहारो पाद छुँचंती, बुझी पारछो कि नहीं. तो morality रे basically कौन हबो ना, subjective in nature, subjective in nature. That means कि it will vary from person to person. Right? तापर अपन मानकर अछि punishment. Here there will be no punishment, but you will have some guilt feeling. Guilt feeling you will have, but no punishment, because it is confined to yourself, it is confined to your conscience, it is confined to your own mind only, that you are only understanding what is the good thing or what is the bad thing you are doing, right? It is nothing to do with your outside, so there is nobody is going to give you any punishment. Suppose my morality is not, is like I have to tell the truth. Sometime I did not tell the truth. So who is going to going to give me the punishment? Until unless I'm not causing any harm to anyone. Suppose I just tell a lies because I want to have fun. Okay, so that is why there is no punishment. But there is a guilt feeling which is going to later and is going to give you mental stress. So that is why people often say ki my moral value is not telling, my value is not telling me to do so. And when you know, when your conscience is telling, don't do this, then don't do that. Trust me. Why? Because 100% your mind knows that it is going to be a disastrous consequence for this, for your action, right? So these are the things we have to understand before understanding the crisis of conscience. I hope you understand what is the difference between morality and ethics. Now we'll go back to the question. What is meant by crisis of conscience? How does it manifest itself in the public domain? तो बेसिकली क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस सेतेबेले आपण मानकर राइज हबो जेतेबेले आपण मानकर कोन हबो ना ऑर्गेनाइजेशनल रो कुछ वैल्यू अछि बा ऑर्गेनाइजेशन रो कुछ ड्यूटी अछि, यू हैव टू परफॉर्म, बट योर माइंड और योर हार्ट, योर कॉन्शियस, योर मोरल वैल्यू इज टेलिंग नो, दिस इज नॉट करेक्ट. Right? Suppose ki something is happening, something very bad is happening, and if you tell the truth, then national security be under threat. Then what you will do? अशोक फेमका केस आम सब पढ़ुं बहुत चाहिए कि गोटे बहुत ज्यादा आइडियल ऑफिसर बोली मना जाए. ही गॉट 50 टाइम्स ट्रांसफॉर्म इन द होल कैरियर. इमेजिन कर. तो से गोटे जगह से 1 ईयर भी टिकु नथिले, तो तांको बहुत ज्यादा प्रेशर आसथिला कि नहीं, तो से जो प्रेशर भितर काम करबा, से जो प्रेशर भितर जो भी ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू को अपलोड करबा, ता सहित आपण मानकर मोरल जिंस को से देखिबा, दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. सेटा ही आपण मानकर को होची क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस. when somebody is coming to you asking for that my name or my name is under the ration card because of the ki biometric काम करनी, just because ki that the old lady became very very old, so all the fingerprints have been worn out, and that time what you will think? You will think about the procedures, that procedure did not meet. You'll think about the documentation because that person is having not having the proper documentation, or you are going to think if food is the basic right of a human being, I should provide the ration to this old lady. This is a real life example. So when you'll become an administrator, there will be possibly, obviously every person, every administrator is going to face this.
there will be sometimes some value attached to the organization. You have to work under the rule of law. You have to work under the conduct. What is your conduct? What is your action as a civil servant? But sometimes your moral or your conscience or your value system is against it, but you have to work under that. That is only known as crisis of conscience. Right? Now you understand. तो ସବୁବେଳେ ଭାବିବା କଥା कि crisis of conscience କୋଉଠି ହବ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ. Deontological ethics ଅଛି, utilitarian ethics ଅଛି, ତ ତାର ଯୋଉ branches ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ mix କରିକି ତମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ. Now you understand what is crisis of conscience? ନା କ'ଣ କିଛି doubt ରହିଲା? ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ what is crisis of conscience? ନା କ'ଣ କିଛି doubt ରହିଲା? ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର mind ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି but ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ଅଲଗା ୱେରେ କରିବା ପାଇଁକା ପଡିବ. तो जदि से पचारची व्हाट इज मेंट बाय क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, तो बेसिकली ए क्वेश्चन ले अपन डायरेक्टली व्हाट इज क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस तारो डेफिनेशन लिखि परिबे इजीली कि ना लिखि परिबे. डेफिनेशन अपन इजीली लिखि पारि कि नहीं? यस. इवन कि अपन एठी एग्जांपल ले परिबे जर्नलिज्म रो. जर्नलिस्ट मे बी कि से जो भी जर्नलिस्ट अछि से कोन अछि जो भी मीडिया अछि, they want to show you the real news, but maybe because of the political pressure, maybe because कि जो जिन तो कह पे चाहूँ चली एडिटर तक एडिट कर दो ची लिखिया पे ही दोने. So those type of things is happening. That is also crisis of conscience. Even also corporate रे भी होची सब जगह रे अपन मान को crisis of conscience face करे पे पड़िबो, अपन मान को देखिया पे पड़िबो. ओके, बुझी पाले कि नहीं? आजिकल तो जर्नलिज्म हम कहते कि मीडिया होची fourth pillar of the democracy, but everybody knows what they are doing. So their work is to be not to be biased. Their work is to be not to show the truth news, but true news about what is happening, but they're not doing that. Okay, thanks to Instagram, you are getting all the news. Okay, what is happening? चलो, तो आमे एबे कौन करिबा? नाइ क्वेश्चन का आमे लिखिबा. कार किछि डाउट अछि, कार किछि आउ किछि कार डाटा अछि बा किछि पॉइंट अछि के कहै ପାଇଁ चाहूछ तो समस्त कमेंट कर परिबो. किछि आउ किछि आप मानको ऐड करे ପାଇଁ चाहूछ इन दिस क्वेश्चन. तो कौन किछि डाटा अछि का आप करे किछि चाहूछ से कहै ପାଇଁ. ओके, तो ये टाइप रो क्वेश्चन से पचारुची, बट स्टिल नाउ हमर ओपीएससी रे क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस ऊपर किछि क्वेश्चन आसीनी, बट यूपीएससी रे बारंबार ये क्वेश्चन आसीची, अलगा पीसीएस रे भी ये क्वेश्चन आसीची. सो आमे भाबी परिबा कि ये क्वेश्चन ए वर्ष आसीबार चांसेस अछि बोली. तो समस्ते सेही हिसाब रे पढ़ो, ताकि एमती पढ़ो कि एग्जामिनर जहाँ भी क्वेश्चन पचारे जोठी भी क्वेश्चन पचारे सेती मात्रा रे आपण मानकर थ्योरी स्ट्रांग हवा दरकार. सेती मात्रा आपण मानकर ऑलरेडी कोट जो भी कोटेशंस अछि सब कोटेशन आपण माने रहबा दरकार. एटलीस्ट 20 कोटेशन माने रखि दिबो. 20 कोटेशंस आपण मानकर ऑफिसर्स मानकर नेम जो माने बेटर काम करचंदी. एबे जेमति तुकाराम मुंडे जो बहुत ज्यादा भलो काम करचंदी. इंटीग्रिटी हे गला, इम्पार्शियलिटी हे गला, को वैल्यू सिस्टम रे को ऑफिसर को आपण माने फिट करे परिबे. राइट? सेमानको ना सब लेखि कि मन रखि दिबो. एडा हो आपण मानकर काम एग्जाम रे. एंड ब्रिंग सम इनोवेटिव आइडिया कि आपण केमिति भलो भाबरे बनै परिबे डायग्राम टू शो योर इंटरनल थिंग कि केमिति आपण माने देखै परिबे. ओके, बहुत ज्यादा तमे देखो एबे गोटे रिसेंटली मु देखुतिली कि फर्स्ट डे रे जने डॉक्टर कोन करचंदी ना से रेजिग्नेशन दे दिचंदी. फर्स्ट डे ऑफ हर ड्यूटी ओनली सी रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस बिकॉज कि तांकु लागिला कि जो भी आपण मानकर आईसीयू रे जो पेशेंट माने अछंती सेमाने दे डोंट नीड टू बी स्टे इन आईसीयू, बट hospital is charging more money to keep those person inside the ICU. That is why when she started telling him this is not correct, this is not how you exploit person. तापर तंको कोन हला ना तंको कोड ना कोड से कहले कि मैं एठी जॉब करबिनी से रिजाइन कर देली. बहुत जगह रे छोटो मोटो सब जगह रे हमको ए जिंस देखिया पे मिले. बेले बेले ऑर्गेनाइजेशन एते जिंस हमको माने कहि थाए करिया पे जोटा कि कोड ना कोठी हमरो जो भी मोरालिटी अछि, हमर जो बेसिक जिंस अछि, हमर जो मोरल वैल्यूज अछि ताकू सबले ब्रीज करे पे चेष्टा करे. और पीपल दैट इज अप टू यू व्हाट यू आर गोइंग टू चूज. लाइक ओके फाइन, I will do whatever the organization is telling me, but जदि morality बा तमरो conscience गोटे जिंस कहूची आ तमे ताको इग्नोर करूचो and you are abiding to do all the things whatever the organization is demanding from you, then definitely you are going to have this type of mental state where you are going to feel that stress and guilty feeling will be there. You will get the mental stress. You will not be
happy to work under that organization. ओके तो से एई टाइप रो जो न्यूज आसुची एबे रिसेंटली अपन देखिथिबे कि बिहार रो जने पुलिस ऑफिसर ही आल्सो रिजाइन्ड बिकॉज़ कि तांको कोहा हला कि अपन मानकु फॉल्स स्टेटमेंट अपन को दबा को पड़िबो अगेंस्ट द स्टूडेंट सो ही थॉट दिस इज नॉट माय मोरल वैल्यू दिस इज नॉट हु आई एम से कोन कले ना सेठु भी से माने रिजाइन कले ओके चलो देखिबा व्हाट इज द मेन वाई क्राइसिस of conscience how does it manifest itself in the public domain केमिति आमे ताको public domain ले manifest करछंती ओके समस्त बुझी पारले कि नाही एबे होप कि समस्त पे बुझी पारथो आने मानको क्लियर हेतिबो तो लाइफ रे तम मानको लाइफ रे भी एमती सिचुएशन आसुथबो बहुत जगह रे और सेते बेले वाइजली डिसीजन नब राइट आउ जदि तम माने गोटे ही जॉब अछि गोटे ही इनकम सोर्स अछि आउ तमे कॉन्शियस भाबे कि बट ना तमे टाइम नब टाइम नै कि तापर धीरे धीरे करबो बट everybody is adult now you have to think very rationally okay but as long term पर्यंत तमरो माइंड को बा मोरल्स को तम वैल्यू को जो कि तम मोरल वैल्यू अछि इंट्रिंसिक वैल्यू जोटा तम माइंड रो आसुची कॉन्शियस रे पूरा आसुची कि दिस इज रॉन्ग लॉन्ग टर्म पाइन जता तम इग्नोर करबो ताले यू आर गोइंग टू फेस सिवियर कॉन्सिक्वेंस ओके हे जिंस को तमे देखिबा दरकार चलो तो फर्स्ट हमें लिखिबा कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन इफ यू हैव proper definition about crisis of conscience you can write about it yes internal sense of right is whatever you are thinking or whatever is your moral value now this organization value is differing from that like organization is telling you to do something which is against your morality against your moral principle right suppose they are telling you to take some severe things like which is wrong but you have to tell this is are going beyond कि आपण मानकर क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस हबो ही हबो जेतबे चाहचंदी को जिंस गोटे रॉन्ग है गोटे एडमिनिस्ट्रेटर आपण माने हे गले आपण जानचंदी कि गोटे जगह रे इलीगल सैंड माइनिंग होउची जोटा कि इलीगल जोटा कि आपण मानकर एनवायरनमेंट को भी काली सकाळे कोन करबो हार्म पहुंचेबो सेतबे तमे चाहूछ कि काम करिया पय नमस्कार तो सेतबे तमे कोन चाहूछ कि काम करिया पय का कि ए जो जिंस को एक्सपोज करिया पय का बट योर सीनियर इज प्रेशराइजिंग गुड मॉर्निंग तो योर सीनियर इज प्रेशराइजिंग और एनी पॉलिटिकल पार्टीज आर प्रेशराइजिंग और गुंडा जो माने कि से काम रे इन्वॉल्व होछंदे दे आर आल्सो प्रेशराइजिंग यू कि डू नॉट डू दिस ओके तो सेही टाइप रो जिंस जो आपनकर अछि से जिंस को आपन को भाबे पे पड़बो कि सेही समय रे आपन कोन करबे हाउ कैन यू कंट्रोल द एक्सटर्नल प्रेशर एंड वर्क ऑन इट बिकॉज कि यू नो दैट दिस इज नॉट रॉन्ग बुझि परछो कि तमर कॉन्शियस रहछि जे दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग बट जते बडा आपन को ऑर्गेनाइजेशन कहउछि कि जिंस को फॉलो करिया बट जिंस रॉन्ग होछि बट ऑर्गेनाइजेशन कहउछि फॉलो करो अदरवाइज तुमको ट्रांसफर कर दबो अदरवाइज तुमको गोटे पनिशमेंट पोस्टिंग हिसाब रे निया हबो तुमको गोटे रूरल एरिया को पठा जिवो तो से पेंगे लोक माने जो भी एडमिनिस्ट्रेटर माने अछंती से माने तको करूचंती बट दैट इज नॉट करेक्ट तो तुमको कॉन्शियस कोड ना कोड कहउछि कि दिस इज नॉट यू दिस इज नॉट मोरल वैल्यू दिस इज नॉट व्हाई this is not why you are here this is not why you became an administrator because when you are when the interviewer is asking you why you are why you want to become an administrator what you are telling because I can work for the civil society I can work for the people I can work for the poor and marginalized but once you coming into the power you are misutilizing that power okay so your value has been changed that should not be done okay तो से जिते भी एक्सटर्नल प्रेशर आसिले भी तुमको कॉन्साइज क्राइसिस कॉन्साइज माने ही है बट ताको तुमको देखिया पई पड़िबो निज हिसाब रे ताको प्रेशर तो आसीबो सब जगह देयर इज प्रेशर राइट तो सेतमें आपण मानकू काम सेंती अंडर प्रेशर रे ही करे पई पड़िबो सेतमें कोआ जाय कि ऑफिसर शुड बी डिप्लोमेटिक इन नेचर he should not tell about all the things what are the steps so anonymity भी आपण मानकू फॉलो करे पई पड़िबो little bit of secretness to not always tell how you are going to implement some policies how you are going to do something because this is going to create chaos in your office itself in your environment so that is why officers should need to be diplomatic with his word with his action and everywhere right चलो तो हमें देखिबा कि इंट्रोडक्शन ले आपण कोन लिखिबे फर्स्ट होची कोन ना crisis of conscience refer to the internal moral conflict experience when one's ethical principle clash with external pressure or institutional demands कि external pressure बेतले आपण मानकर जो भी moral principle अछि जो भी आपण मानकर ethical principle होची
ता सहित जब क्रैश होची ताको हम कोन कहउचंती क्राइसिस ऑफ कॉन्सेंस राइट Aristotle concept of moral distress Gandhi's emphasis on satyagraha highlight the tension between dharma adharma in decision making तो केमिति तम माने डिसीजन नब राइट केमिति तम माने डिसीजन नब अर्जुन कथा माने अछि ना नै अर्जुन और कृष्ण ऊपर जब आपण मानकर फर्स्ट टाइम एथिक्स वाज इंट्रोड्यूस ततबेला आपण मानकर गोटे क्वेश्चन आसी ही थिला कि केस स्टडी रो हमें ताको भी हमें देखिबा कि जेतले से युद्ध करे पे जाउचंदे ना तो तांका पाखर सेतबेले कोन अछि ना क्राइसिस ऑफ कॉन्सेंस अछि अरे मु काहा को मारिया पे जाउची सेमाने समस्या होचंदी मो निजर सेमाने समस्त होचंदी मो भाई बट मु सेमानक अगेंस्ट युद्ध करबी वार करबी बट तांको जतबेले धर्म भी देखिबार अछि ना व्हाट इज योर धर्म व्हाट इज योर धर्म टू जेतबेले आपण क्षत्रिय हेचंदी सेतबेले क्षत्रिय हिसाब धर्म कोन धर्म अधर्म लड़ाई सेटा एठी आपण माने ब्लड रिलेशन को आने दिस इज हाउ कृष्ण तांको बुझेइतिले कि नै सेटा होच आपण मानकर क्राइसिस ऑफ कॉन्सेंस राइट चलो देखिबा कि कोठी हबो ना क्राइसिस ऑफ कॉन्सेंस देखिबो प्रोफेशनल ड्यूटीज रूल्स बा ऑर्डर हे गला बा पर्सनल वैल्यूज हला इनर वॉइस तो मझरे जो जिंस आसिला जो कॉन्फ्लिक्ट तमरो क्रिएट होची इन बिटवीन दिस दैट इज नोन एज क्राइसिस ऑफ कॉन्सेंस केमिति हबो व्हिसल ब्लोइंग हे गला रेजिग्नेशन हे गला पॉलिसी पैरालिसिस हे जिवो माने कोनोसी पैरालिसिस माने कोन पैरालिसिस माने जेतल तुमको पैरालिसिस हम तुमर बॉडी पैरालिसिस हे जाउ माने कोन भलो भाबरे काम करनी ना दैट इज मीन ओनली पैरालिसिस तो पॉलिसी पैरालिसिस माने भी सही है जो भी तुम माने पॉलिसी आनी जो भी जिंस तुम आने को चाहो सी भी कोट ना कोट बेटर वे रे काम करबन जस्ट बिकॉज कि काहे ना आपण मानकर पॉलिसी आपण इंप्लीमेंट ही कर परिबेनी तो एई तीनटा जिंस तमे लेखि भी पारिबो तापर हमें जिबा कि लेखिया पई का अंडरस्टैंडिंग बुझिया पई पड़िबो व्हाट इज क्राइसिस ऑफ कॉन्सेंस अंडरस्टैंड करबो तापर ही आगु जिबा फर्स्ट जिंस हला मोरल डिलेमा कोट ना कोठी स्टार्ट ही जिवो केमिति ना कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल वैल्यूज एंड प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन तो तमर पर्सनल वैल्यूज कोन अछि या प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन कोन अछि क्रिएटिंग साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कांट कैटेगोरिकल इंपेरेटिव एंड यूटिलिटेरियन आउटकम्स कांट कर जो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स थिला कोन थिला माने तुम जानिछो माने अछि कार माने अछि व्हाट वाज द कांट कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स दुईटा प्रिंसिपल से कहथिले कार माने अछि फर्स्ट जिंस कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी means which is applicable to every part of this world like you have honesty it is all over you are going to get praise because of your honesty truthfulness integrity universal principle second जिंस कौन कहथिले से कि you always behave the way you want people to behave with you okay reciprocity वाला जो प्रिंसिपल ओके गोटे थिला कोन कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी आउट थिला तमर प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी मींस कि जो जिंस तमे चाहुचो तमनक पे लोक माने करंतु फर्स्ट स्टार्ट डूइंग दैट थिंग फर्स्ट यू स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग बुझि परछ कि नै तमे जदि चाहुचो कि तुमको रेस्पेक्ट मिलो तमे जदि चाहुचो कि लोक माने तुमको पसंद करंतु फर्स्ट यू स्टार्ट गिविंग दैट थिंग तो सेई दिना प्रिंसिपल से कहितले तापरे यूटिलिटेरियन आउटकम्स कोन कि तार यूटिलिटी कोन अछि यूटिलिटी रु आसी जी ही यूटिलिटेरियन तार यूटिलिटी आउटकम कोन अछि हाउ दिस थिंग इज गोइंग टू यूटिलाइज फॉर द बेटर पॉपुलेशन और बेटर मान जो भी लोक मान अछंती पब्लिक मान पेगा यूटिलिटी तार कोन अछि राइट तो बेसिकली तापर आपनकर कोन आसिला कि एथिकल पैरालिसिस ओके एथिकल पैरालिसिस अब the inability to act due to competing moral claims as seen as Arjuna's dilemma in Bhagavad Gita before the Kurukshetra war already mu tamanu kahichi kon tam mane ei type रे example dei paribo 100% mythology ru Arjuna ngara example Mahabharata he gala apan manकर रामायण he gala जोठी कि तम मानकर जो जगह रे कि वैल्यू को तुमको दबा को अछि सेही सब जगह त माने देई पारिबो ए सब एग्जांपल राइट थर्ड कोन आसला वैल्यू कंट्राडिक्शन हबा स्टार्ट करबो यस तो क्लास बिटवीन इंडिविजुअल कॉन्साइंस और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर exemplified though by whistleblower cases in corporate and government sectors जो माने whistleblower थांती what is their work से माने कौन करंती माने कि जो किछ ऑर्गेनाइजेशन नेगेटिव किछ गोटे जिंस होची बा किछ गोटे करप्शन होची ताले से माने लोक मान को सामना को सेटा आनिबे लोक मान को सेटा जणेबे कि this organization is not being faithful or this procedural or the conduct this organization is conducting
that is not faithful, that is not ethical. They're bringing that to the population, they're bringing to the public domain. तो एटा अपन मानकर पब्लिक रे भी हे पारे, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और अपन मानकर कॉर्पोरेट रे जे कोनोसी ऑर्गेनाइजेशन ले भी एटा हे पारे. तापर कोन आसिला, तापर आसिला कि institutional pressure, that means ki external forces compelling actions against moral conviction, creating what roles term moral injury in professional settings. ए जो जिनसे सब अच्छी ना से सब जिनसे अपन मान को roles कौन कहिथिले, इमानुएल कांट कौन कहिथिले बा तांकर philosophy, जेरेमी बेंथन कर कौन philosophy थिला, that is from your जो philosopher and thinkers, moral philosopher and thinkers जो अच्छी अपन मानकर वर्ल्ड इन इंडिया सेही पार्ट को आपन को पढ़े पे पड़िबो, सेही पार्ट रो ए सब जिंस आपन माने लिखि पारिबे. ओके ताको आपन को कोट करिया पाएगा एग्जाम रे को कि अलगा को क्वेश्चन ले कोट करिया पाएगा आपन को फेवरेबल हबो. बट प्रॉब्लम होची कि सेठी कोनोसी भी फिलोसोफर बा मोरल थिंकर सेमानकर ना लिखा हेनी. नाउ दिस इज अ वेरी वेग डेफिनेशन ऑफ सिलेबस. नाउ फ्रॉम वेयर पार्ट व्हाट टू रीड, फ्रॉम व्हिच quotation you will read, that is a very difficult thing. What we are going to do, of course we are going to discuss about it. So first of all we'll look into the previous year questions, which quotations they have asked already. So we'll try to discuss about it and other quotation by the same thinker or moral philosopher. Likewise we can conduct our classes, right? Because there is no complete syllabus about which moral philosopher or which moral thinkers we are going to decide, we are going to talk about. तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी ट्राई करबा से सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नो हमको पढ़िया पाएगा जो आज सब क्वेश्चन आसीची, तो सही हिसाब रे हमको आगु आगु जिबार अछि, राइट? सेमते हमें तमन अप्रोच भी तमे माने भी इवन कि जो माने सेल्फ स्टडी करूचो, जो माने सेल्फ स्टडी करूचो से माने भी अप्रोच से ही रखो. अदरवाइज के बहुत ज्यादा वेग अछि भाई, बहुत ज्यादा अछन तो समस्त तो पढ़ी हेबन आ को जिंस आपन को सिलेबस तो मैच करूची सही हिसाब रे हमें पढ़िबा. तापर डिसीजन पैरालिसिस सब स्टार्ट हम जेमति कि इनएबिलिटी टू चूज बिटवीन इक्वली वैलिड एथिकल फ्रेमवर्क्स और लीडिंग टू मोरल डिस्ट्रेस एंड प्रोफेशनल बर्नआउट. तो जते बेले बारंबार बारंबार आपण मानकर मोरालिटी डाउन होची, बारंबार बारंबार आपनकर वैल्यू सिस्टम सहित क्लास होची, तो ऑब्वियसली कोन हबो ना डिसीजन पैरालिसिस भी हबा स्टार्ट हबो. यू विल बी नॉट इन ए स्टेज टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. अगेन identity crisis, then you will ask yourself who I am, why I am doing this, I am telling continuously lies again and again when my morality is saying do not tell lies. I know I am not this type of person, I became someone, right? This thing happens, right? Happens or not? Life रे भी जिन सोची ना particularly संग मानो सहित गला बेले भी to make someone happy you do something which is not permissible by your conscience, which is not permissible by your moral principles. Even also organization like to save your job, sometimes you do stupid things or say stupid things to the people ki, okay this, but this is not true, this is not you. So you start asking or questioning yourself, what happened to me, I am not the person and I am not recognizing myself, right? तो ये सब जिनसे आपण को देखिया पाएगा पड़िबो. आइडेंटिटी क्राइसिस कोन अछि ना क्वेश्चनिंग ऑफ प्रोफेशनल आइडेंटिटी व्हेन इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स conflict with personal integrity and ethical foundation. तो जदि कोनोसी भी आपण मानकर कोन अछि इंस्टीट्यूशन बारंबार बारंबार डिमांड करूची to do something which is not according to you, this is not correct or this is not how you operate or this is not how you think or this is not your moral value, तो से पेंका ए प्रॉब्लम भी आपण मानकर अछि. ओके मैनिफेस्टेशन आपण को क्वेश्चन पचासला इन पब्लिक डोमेन ले कोन कोन मैनिफेस्टेशन अछि ठीक देखिबा. हेलो ओके चलो तापर हम देखिबा कि पब्लिक डोमेन ले कोन कोन तार मैनिफेस्टेशन माने सेकंड पार्ट को हमें जाउछन. कोन प्रथम होजे कि व्हिसिल ब्लोइंग केसेस. व्हिसिल ब्लोइंग केसेस कोन कोन अछि तो फर्स्ट हला सिविल सर्वेंट लाइक अशोक खेमका. तो ऑब्वियसली समस्त ट्राई करिवो मन रखिया पइका जो माने बहुत एक्सेप्शनल वर्क करचंती, जो मानकर सिविल सर्वेंट जो माने बहुत बेटर वर्क करचंती सेमाननको एग्जांपल मन रखिया पई सब ट्राई करिवो, राइट? तो जदि अशोक खेमका कथा कहबे एक्सपोजिंग करप्शन डिस्पाइट कैरियर रिस्क, demonstrated moral courage over professional security.
कि तांकर मोरल करेज बहुत ज्यादा थिला से तो भाबुथिले कि मते कोन करबे कि मते आउ कोनोसी गोटे एमिति सेरिमोनियल वाला रोल दे देबे सेमति होउची कि नै बहुत ज्यादा ऑफिसर अछंती दे आर पोस्टेड इन सेरिमोनियल रोल बिकॉज दे आर टेलिंग दैट दिस इज अ पनिशमेंट दिस इज हाउ आवर पॉलिटिकल सिस्टम वर्क ठीक अछि ऑफिसर भलो काम करछि तो ठीक अछि को ट्रांसफर कर देबा एगो भलो पोजीशन दिया दिया ही जीवन राइट जोडी तांको कोन करबा कि गोटे टूथलेस टाइगर बोले तांको रखि देबा तो सेई टाइप रो फील न करिकि सेई टाइप रो तांको सहित हेइची बट से घटना को से इग्नोर करिकि कोन करचंती ना से माने कोन करचंती ना से माने अशोक खेमका जी तांकर कोन करले करप्शन को से बाहर कोनथिले पॉलिसी डिसेंट हे गला सेमती ऑफिशियल रिजाइनिंग ओवर एथिकल डिसएग्रीमेंट with government policies in the US State Department resignation over foreign policy decision तो ए एग्जांपल भी लिखि परिबो और एल्स की आउ को भी ऑफिसर तम माइंड रे अछंती बा जोठी जोठी आपन को फील होची कि पॉलिसी डिसेंट हेची से एग्जांपल भी लिखि परिबो तापर असले कोन द जुडिशियल इंडिपेंडेंस so judges facing pressure in politically sensitive cases balancing constitutional duty and external influence and public opinion तो जोटा कि पॉलिटिकली सेंसिटिव वाला जो भी केसेस है जेमती कि राम मंदिर केसेस आम कंट्री रे ओके और सम केसेस व्हिच इज गोइंग टू जेमती कि आपण मानकर ट्रिपल तलाक ए टाइप रो जो केसेस अछि ना सो ए सब केसेस टाइम रे आपण मान को पब्लिक ओपिनियन लो आवश्यकता होची कोन करबा दरकार पॉलिटिकली रे इन्वॉल्व थिले तापर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसओबीडियंस हम स्टार्ट हो आईएएस ऑफिसर रिफ्यूजिंग टू implement unconstitutional orders invoking article 311 आर्टिकल 311 ले कौन अछि ना जो भी ऑफिसर अछि तांको अपन माने विदाउट एनी वैलिड ग्राउंड और जे तांको अपॉइंट करचंती तांको टू तळ रैंक रो केही भी लोक तांको सेटू माने हटै परबेन रिमूव कर परबेन प्रोटेक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को सबटू हाईएस्ट रखिया दरकार तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऊपर भी आपण मानकर यूपीएससी रे भी क्वेश्चन आसीची तो जेहेतु हम ओपीएससी रो जे क्वेश्चन करि नांती ताको हम रखिचंती कि हमरो लास्ट मोमेंट रे करबा तो सेत पे हम ताको डिस्कशन करूनी तापर कोन आसिला कि मीडिया एथिक्स हेगला जेमती कि जर्नलिस्ट चूजिंग बिटवीन एडिटोरियल इंडिपेंडेंस एंड कमर्शियल प्रेशर्स अफेक्टिंग प्रेस फ्रीडम एंड पब्लिक डिस्कोर्स तो कोट ना कोट जो भी एडिटोरियल अछंती से माने कोन कोचन कि से माने कोन हम पर इंडिपेंडेंस अछि कि do I have the independent do we have the independent to cite all the negative things or to show the truth about what is happening to the country or to the population no तो से कमर्शियल प्रेशर आज जाउची फ्रीडम आज जाउची प्रेस फ्रीडम को सेटा अफेक्ट करूची पब्लिक डिस्क्लोजर को भी सेटा अफेक्ट करूची कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी भी बिजनेस लीडर्स जो मन अछंती बैलेंसिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विथ सोशल रिस्पांसिबिलिटी स्पेशली ड्यूरिंग एनवायरमेंटल क्राइसिस और लेबर डिस्प्यूट तो सेमान को बैलेंस करे पे पड़िबो कि भाई प्रॉफिट को तमे मैक्सिमाइज करे पे चाहउछ ना सोशल रिस्पांसिबिलिटी तम पाखरे किछि उत अछि एनवायरमेंटल को जेमति तमे जब चाहउछ कि फास्ट फैशन कथा हम कथा होचंदी ना कि भाई फैशन जो भी आपण मानकर आगुरु जो भी कन्वेंशनल वे थिला फैशन लो केमति थिला ना इट वाज डिपेंडेंट ऑन द सीजनल थिंग्स भाई एबे गरम वाला सीजन आसी तो ए टाइप रो क्लॉथ्स आर गोइंग टू बी consumed by our population so they used to bring that type winter asigala autumn asigala to rainy season asigala but now what is the problem ki apan manakar every week apan manakar fashion change he jachi hela तो सेति पाइंगा सेही सब जिंस कोट ना कोठी एनवायरनमेंट को तो हार्म पठौछि कि नाही आउ ए जो फैशन जो चेंज होछि दैट इज आल्सो एक्सप्लॉइटिंग लेबर माने कोन ना लो वेजेस से को पेमेंट करा होची राइट आउ कोन होची ना लॉन्ग आवर से माने काम करिवे लॉन्ग आवर्स से माने काम करिवे तो बेसिकली दिस इज आल्सो कोट ना कोट इंपैक्टिंग और एक्सप्लॉइटिंग द ह्यूमन राइट्स so this is also what is doing na exploiting the human right कोट ना कोट ह्यूमन राइट को एक्सप्लॉइट भी करूची बुझि पालो फास्ट फैशन आसीगला मैं जिनस एति पई कहि दोची देयर माइट बी क्वेश्चन कि जो तमर कॉर्पोरेट वाला जो एथिक्स अछि that is also coming under the application of ethics तो फास्ट फैशन हे गला आउ आपण मानकर कोन हे गला ग्रीन वॉशिंग हे गला ई सब जिन तमर एथिक्स से भी माने पचर परिबे when a company is deceptive towards the product किस लिखुची कि मु socially responsible or they have given more time for designing their product in such a way that will look outer side it is going to look for the customer how the customer or consumer is going to look into that product
environmental friendly or environment responsible, but that is not the thing, or they are charging more money because they want to maximize their company's profit. So that is also coming under the ethical issues also there, which is greenwashing, right? ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି greenwashing. ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ethics ରେ ପଚାରି ପାରିବ where application ethics, applied ethics, okay, branch of ethics ର applied ethics ରେ, right? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି addressing crisis of conscience requires robust institutional frameworks supporting ethical decision making, whistleblower protection, moral education and civil service training, constitutional values, Gandhian principle provide guidance for navigating these complex moral landscapes. तो constitutional values रे आपण मानकर value system जेतले पढ़ा हबो तो आपनकर constitutional values रे कोन अछि ना आपण मानकर equality, okay, justice ए सब जिंस आपण मानकर constitutional values रे कि justice हे कि नाही, equality हे कि नाही, तो तमे कहउछन कि गांधीयन प्रिंसिपल सेते बेला आपण जानथिबे गांधी जी तालिस्मा, ओके, यही सब जिन आपको हेल्पफुल करबे कि गांधी जी क्यों हिसाब से चाहूले रूरल लाइवलीहुड को डेवलपमेंट करने का, राइट? तो गांधी जी कौन कौन जिन सब चाहूले सी कमी कहते कि जो कौन भी तुम पॉलिसी रे डिसीजन नौच फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक कि हाउ दिस पॉलिसी इज गोइंग टू इम्पैक्ट द पोरेस्ट ऑफ द पोर पीपल and according to that you take the decision. If you thinking कि this policy is going to impact positively to the poorest of the poor people, then this is the best policy to do, right? तो यही सब जिनस आपण मानको लेखिया पई पड़िबो कि व्हिसिल ब्लोअर मानको भी प्रोटेक्शन देबा दरकार. मोरल एजुकेशन इज वेरी इंपोर्टेंट, इवन आल्सो स्कूल रे भी मोरल एजुकेशन हबा दरकार. दैट मोरल साइंस वाज देयर इन आवर स्कूल अप टू 6th स्टैंडर्ड. बट जेतेबेला हमें बुझिया पई चेष्टा करले टिके आपनकर डेवलपमेंट हैला कॉग्निटिव आइडियाज सेतेबेले मोरल स्टैंडर्ड का में हटे देले. बट there is a rationale behind it. Why? Because when we're जेतेबेला हमें एटीट्यूड कथा पढुचंती ना, एटीट्यूड पढुचंती सेतेबेला हमें कोन पढुचंती, what are the main inculcating, which are the reason of how the society or our parents or school is going to inculcate attitudes कि positive attitude आम बॉडी रे केते बेला आसीबो, आम माइंड रे केते बेला आसीबो ना, छोटे बेला जेका चिल्ड्रन थिबे सेतपई का छोटे बेले हमको मोरल वैल्यू सिखाइछि कि टेलिंग द ट्रूथ, ओके, इंटीग्रिटी मेंटेन करबा, राइट, काहा को मिछ कथा कहबनी कि काहाडू किछि चोरी करबनी, सब बेले कोन करबो ना सांग होइकि रहबे. ए सब जिंस तो छोटे बेले सिखाइछि मोरल वैल्यूज. स्टोरीज मानकर भी सिखाइछि केमते आप मानकर मोरल वैल्यूज हवा दरकार. समस्तर से जो स्टोरीटा समस्त जानथिबो ना नाही, जो जने राजा थिबे से कोन करबे, कोन करबे राजा, राजांकर बहुत इच्छा थिबो कि सब बेले खाली जाइंकी सब गुडा को जिते सब तांका आसपास राजा जो राज्य थिबो, ही वाज वेरी ग्रीडी. तो से कोन करबो ना, ही विल फ्लॉन्डर ऑल द माने जो भी तंगर बाउंड्री थिबे बा सराउंडिंग जो भी आपनकर किंगडम थिबो सब किंगडम रे से फ्लॉन्डर करथबो. One day goddess will appear and goddess will tell what you want, any wish, whatever you will ask, I am going to grant you. तब राजा कौन कहबे, राजा कहबे कि मु चाहूची कि मु जहा छुई भी सुना है जबो. सुनिचे कि नहीं से स्टोरी, मु जहा छुई भी सुना है जबो. तापरे कोन हबो ना, तापरे होची राजा जहा भी छुईबे से तो सुना है. माने भाबो मु जे छोटे थिली, वाओ मते एमते लागुतला कि बढ़िया स्टोरीटा जहा छुईले ही सुना है जबो. बट जे स्टोरीटा आगु बढ़िया को लागिला सेतबेले से खाइबा छुईला भी सुना है गला. तापर सबुठ तार सबुठ फेवरेट कि सबुठ तार बिलव्ड वाला जो डॉटर तांको भी छुईले सेडू सुना है गला. सेडू से बहुत ज्यादा कांदी कांदी रहले कि भगवान अबे तुम जल्दी जल्दी आस, मते ए जो बून देछि तुम मते, बून माने बर, जो मते बर देछि बरडा तुम मोठो नै जाओ, ये विश टाको तुम मोठो नै जाओ. बुझि परछो कि नहीं. तापर कोन हला ना, तापर जांकी भगवान कहले ठीक अछि ताले तांकोठो से बूनटा निया है गला. आउ देन ही बिकेम ए वेरी वेरी ऑनेस्ट किंग. आउ सब बड़े जुडिशियसली से काम करे स्टार्ट कला. दिस टाइप ऑफ स्टोरीज, काइंडनेस ऊपर बहुत ज्यादा स्टोरीज है, करेज ऊपर बहुत ज्यादा स्टोरी हमें देखी चंदी. बुझि परछो कि नहीं. तो स्मार्टनेस ऊपर जो सही जो करे आपन को काहे की कहैछि एक स्टोरी काहे, डू नॉट बी द ग्रीडी पर्सन. जदि आपन ग्रीडी हेबे ताले ही ना आपन माने करप्शन करिवे. बुझि परछो. बट हमें से सब स्टोरी को भूली जाई चंदी. तो हम भीतर टिके टिके आसुची पैसा पैसा पैसा. हाँ कौन कहछो पिंकी है पैसों वालों की. चलो तापर हमें जिबा आगो को कौन क्वेश्चन अछि, एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलबीइंग एंड पीस. एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलबीइंग एंड पीस. साइट एग्जांपल फ्रॉम योर ओन ऑब्जर्वेशन.
ओके निजर ऑब्जर्वेशन ले तमनको एग्जांपल दबा पाएगा पड़िबो आजिकली आ को जिनसर वैल्यू नाही तो केवल वैल्यू को जिनसर अछि ना पैसा रो वैल्यू अछि आउ कोनोसी जिनसर वैल्यू नाही बुझि पाइले कि नाही तो समस्ते पैसा पछरे गुड़ौचंते हैला ठीक अच्छे किसी कथा नहीं बट लेजिटिमेट वे हवा दरकार टू अर्न मनी हार्ड वर्क करो मनी मल्टीप्लायर वाला इफेक्ट प्रयास करो कि सब जमी मनी को मल्टीप्लाई कर पारे जमी बैंक मनी मल्टीप्लाई कर राइट चलो तो आम भी देखा कि एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलबींग एंड पीस एबे इमेजिन कर एथिक्स न था सोसाइटी रे एथिक्स माने जदि न था कि रेस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन और रेस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स और यदि आपण मानकर एथिक्स न था ऑनेस्टी जदि एबे आपण मानकर पाखरे एथिक्स न था इंटीग्रिटी जदि न था कि आपण मानकर इम्पार्शियलिटी बा जस्टिस ओके एई सब जिंस जदि सोसाइटी न था बा जदि था कि हार्मोनी हार्मोनी सहित जो आमे रहउचंती तो एई सब जिंस न था ताले सोसाइटी रे कोन प्रॉब्लम क्रिएट हेता जस्ट इमेजिन किए काको हानि देलानी किए काको मार देलानी किए काको गाली देलानी किछि माने नाही रेस्पेक्ट ही नाही तो बेसिकली आम जो कहते हैं सिविलाइज्ड हो जाइछंती ना तो सिविलाइज्ड रो तुरंत आम कोड पालट जीवा एनिमल्स ओके एनिमल वाला मूवी देखछो ना नहीं तो लाइक सेमती पूरा एनिमल हो जीवा आम एनिमल वाला मूवी सब देखी जीवा ना जेएनजी पॉपुलेशन केमती देखिबन राइट तो जो आपण मानकर जो ट्रांसफॉर्मेशन है रणबीर कपूर फ्रॉम एनिमल टू राम जब रियल लाइफ रे सेमती के मनुष्य ट्रांसफर हेगा तो क्या ही कहना but they are doing their roles they are doing their actings they are nothing personal एनिमल मूवी देखी ना लोपा मु देखछि केंदो आई एम बेसिकली मूवी गर्ल मूवी असला माने जाय बट एबडे रिसेंटली जाय पानी बट फिर भी मु जाउछि समस्त मूवी जा मूवी भलो यार मूवी जीवो माइंड फ्रेश हे गेला 2-3 घंटा जो माने स्ट्रेस रोच एग्जाम में प्रिपेयर करछो 15 दिन रे मूवी पळा मूवी रे माइंड फ्रेश हे गेला बस बट मूवी असला पर ठीक अछि आउ से मूवी ऊपर के डिस्कशन एंड देन यू स्टार्ट स्टडीिंग ओके मूवी जीवाटा किसी खराब न मूवी गले किसी प्रॉब्लम न ओके तो कोड ना कोठी पीस को बा वेलबींग सोसाइटी रो केमती रहिछि बिकॉज ऑफ द एथिक्स एथिक्स अछि बोली हमर पीस अछि आ सोसाइटी रे वेलबींग हे पारुछि जदि एथिक्स न थांदा ताले पॉसिबल हे न थांदा ओके चलो बुझिलो कि नहीं तो आज जो आम क्वेश्चन सब करूँ जो भी क्वेश्चन आम आज पर्यटन यूट्यूब रे कर आई होप कि समस्ते आउथरे प्रैक्टिस कर लेखा प्रैक्टिस कर बुझी तो पारुथबो समस्ते कहीं बुझी पारिबनी मु जो पढ़ाऊँ ना तो बुझीबाटा बहुत ज्यादा कौन है ना इजी जे कौन भी कनसेप्ट आम देखती शुणती आम बुझी पारती बट ताको लेखिबाटा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट केमती लेखिबो तो से सब ट्राए कर कि निजे ताको केमिति भल भाव लेखिबो इमेजिन कर कि तुमको से क्वेश्चन लिखिबार अछि तो केमती तमे लिखिबो लिखिबा इज मोर इंपोर्टेंट न लिखिले हबनी राइट तो आमे प्रॉपर्ली जब तुमको देइछि तो यू कैन स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स ऑलरेडी में कथा हिचंती व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स ओके एथिक्स रो माने कोन अछि ना एथिक्स माने हला जोटा कि आपण माने गोटे मॉडल प्रिंसिपल अछि जोटा कि आपण को गाइड करिछि तो ह्यूमन एक्शन कि आपण मानकर गुड हबो कि बैड अछि राइट और रॉन्ग गुड और बैड दैट मीन ओनली एथिक्स बट एबे मु तुमको ए जो डेफिनेशन अछि एटा टिके हार्ड अछि तो से पई तमने ट्राई करबो कि सिंपल डेफिनेशन को मन रखिया पई ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर सिंपल डेफिनेशन it will going to give you more confidence like you are going to write in a better way if you are having the simple definition सब ट्राई करबो काहे एग्जाम रे कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन मन रखि कि लिखिबा इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माने पड़िबने तो स्ट्रेस भितरे सब सिंपल डेफिनेशन मन रखिबो तो ethics as defined by Aristotle is a science of character and conduct that guide human behavior same जिंस moral principle जोड़ा कि human being को guide करिवो कि तार behavior पाएगा सेटा को से लिखिछि science of character and of conduct माने action और तुमरा character कौन रहइबो ओके तो towards eudaimonia माने कौन flourishing it serves as the foundational for creating harmonious societies and promoting individual well-being through moral principle and virtue एई तो हमर कोठु आसी पर्टिकुलरली तमरो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस जोटी कि तमरो सिलेबस रे अछि एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ माने पड़छि कि नै एथिक्स इन पब्लिक लाइफ पब्लिक माने तम पर्सनल लाइफ एंड सॉरी एथिक्स इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ
तो एथिक्स रो कौन जिंस अछि कि आपण मानकू पब्लिक पर्सनल लाइफ रे भी आपण मानकू हेल्पफुल कर फॉर एग्जांपल कि somebody इज काइंड देखो काइंडनेस गोटे आपण मानकर एथिकली एथिक्स अछि कि नै काइंडनेस हम दरकार नाउ सपोज कि तमे भी जाउछो गोटे गरीब लोक को खाया को देलो बा गोटे लोक को तमे वर्ष रे बहुत उदा होतले त गोटे छता देतलो you tell me one single person who is not happy by helping others there will be no such person every individual who helps other always get the inner satisfaction always get the inner satisfaction that I am happy so that is the real dopamine okay so that is the real dopamine बेबी नी बेबी तेरे आखि तेने डोपामाइन जो नो सेटा होचे बेबी रो आखि किसी डोपामाइन नो ओके तो बेसिकली जतबे तुम माने एथिक्स फॉलो करबो ताले कोड ना कोड तुमको काइंडनेस पाएंगे तुमको कौन हबो ना तुमको डोपामाइन सेटा वाली क्रिएशन हबो जो तुमरे रियल डोपामाइन ओके तापर सेकंड जिंस कोन आसिला ना आपण मानकर गोटे लाइफ रो गोटे सैटिस्फैक्शन आसीबो satisfaction about what is your ethical people will consider in the society for you that look at into that person is highly ethical that person man आपण गोटे society रे गोटे आपण गोटे status बढ़ेबो social status is going to give ethics लगे पर्सनल लाइफ रे ए सब जिंस तुमको जदी एथिकली मेंटेन करिवो ताल तुमको सोसाइटी रे गोटे रिकॉग्निशन मिलिबो सोसाइटी रे गोटे तुमरो गोटे अवधि रहबो कि भाई यस दिस पर्सन इज बीइंग एथिकल दिस पर्सन इज बीइंग ट्रूथफुल जो तुमको सैटिस्फैक्शन जो तुमको रेस्पेक्ट that is also needed for your life तो पर्सनल लाइफ रे ए सब जिंस अछि आ इंडिविजुअल लाइफ रे दे ए जिंस अछि गल नाउ इमेजिन कि एवरी पर्सन इज थिंकिंग लाइक दैट ताल इमेजिन कर कि सोसाइटी केते सुंदर हे तो बेसिकली एथिक्स तमन को कोन करछि कोट ना कोट गाइड करछि कि नै हाउ टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स रेस्पेक्ट हबा दरकार बा समस्त को जेमति हमें कहजनी हमर जो कंट्री अछि पर्टिकुलरली इंडिया इट इज डाइवर्सिटी इन रिलीजन बहुत सारा रिलीजन अछि बहुत ज्यादा लिंग्विस्टिक ग्रुप अछि बहुत ज्यादा आपण मानकर लोक अछि जो माने कि एथनिकली कम्युनिटी डिफरेंट डिफरेंट अछि सेही सोसाइटी रे आपण मान को टॉलरेंस भी हबा दरकार टॉलरेबल भी हबा दरकार टुवर्ड डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट सेटा भी आपण मानकर केमिति हबो ना इफ आर फॉलोइंग एथिक्स इन इंडिविजुअल लेवल राइट 90% civil servant so their oversight power involving in corruption only 10% civil servant कुछ छाड़े देखो चाणक्य गोटे कथा कहथिले कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए फिश टू लिव इनसाइड द वाटर एंड डोंट ड्रिंक इट राइट तो जो भी आपण मानकर सिस्टम अछि तो आपण केबे भी 100% एलिमिनेशन ऑफ करप्शन कि सिस्टम रो पूरा करि परिबे नाही बट आमे तांको बेटर वे रे एनकरेज करि परिबे कि डू देयर वर्क तो हमको प्रोग्रेस आड़ को बेसी हमको माइंडसेट रहबा दरकार दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक you need to be very very optimistic that is called positive attitude toward the civil servant positive attitude toward the system positive attitude to becoming a civil servant itself if you are having this negative attitude then you're not going to work in a very positive manner बुझि परछ कि नै आगुर भी थोर तमे कथा कहितले मु कहितली कि something is going wrong that doesn't mean that will tell the entire system is not working people are working because of that there is poverty eradication so there is substantial and statistical evidence कि पॉवर्टी रो इराडिकेशन हेची कोठी ना कोठी आम कंट्री रे इलिटरेट जो भी संख्या थिला बे इलिटरेट डेवलपमेंट हेची वुमेन माने दे आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड वुमेन मानकर एम्पावरमेंट हेची सो वी कैन नॉट से डायरेक्टली दैट कि जो भी 90% जो भी ऑफिशियल अछन दैट इज दिस इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स ओके तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स से कोन अछि कि आपन डिस्क्राइब करचंती कि गोटे आपन गोटे डाटा आपन देले कि नाउ 1% in my class is believing that 90% जो भी आपण मानकर सिविल सर्वेंट अछि दे आर करप्ट ताका में कोड देखि परबो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स बुझि पले कि नहीं how many officer you know means very very closely or how many officers you met directly I never met any officer who is very very egoistic I am having contacted over 50 officers they are not egoistic they have to work in a certain way that is their culture they are being trained in not to be indulged in very very personally with the public that is they have to follow that doesn't mean that they're egoistic and do you know that one officer how much work pressure they're having you are just telling this that officer did not do my work they are having work like you don't understand 24/7 they are getting calls again and again sir this thing happened and now because of the internet spread
because of the like how this is happening, like internet is spreading very rapidly, and now the officer are having more phone number which is given to all the public, so they are calling for everything. Sir, power is not there for 1 hour, this thing happened. Do you think that they are also having a very frustrated life? No, they have to cope up with their emotions, the stress, and they have to work under it. You need to understand, and you will understand when you will become a truly a officer. Trust me on this. So this is not an easy job. It is 24 into 7 hour work, right? You cannot tell that ki egoistic attitude they're having. Not everyone. You are now generalizing things. You should not do that. Okay? Chalo. Okay, so individual ethics seems like integrity और empathy आसीगला empathy और integrity social in माने well-being केमती करिवो ना trust करिवो तापर आपण मानकर harmony करिवो justice करिवो comprehensive human well-being peace sustainable development right. तो जदि आपण मान देखिबे कि जदि individual level रे तम मानक पाखरे ethics धीरे धीरे empathy create हैला integrity create हैला सेटा कोट ना कोट आपण मानकर social well-being ही create करिवो by trust, harmony and justice जोटा कि society ପାଇଁ का needed. If you are going to live in a society where there is no harmony, when there is no trust, when there is no justice, then do you think that you can stay? Now if somebody is committing some crime and we are not on means we are committing some crime and that punishment, they are not getting the punishment, that doesn't mean that कि आपण माने से लाइफ रे बंची पारिबन. एवरीबॉडी वांट कि गुटे जस्टिसेबल माने सोसाइटी रहबा दरकार. I was working under a contractual job in government of Odisha in science and technology department. I have visited many times secretariat. I have seen the reality. Okay, fine. Maybe your experience with those type of officer was bad. I'm extremely sorry for that. But that doesn't mean that you will criticize all the officers because they're working. I have seen some officers, they really work. Okay, so it different from person to person. Okay, but next time I will also tell ki next time may God may let you meet some honest and some integrity oriented officers next time. Obviously you are going to meet. Okay, जो भी जिनसे अच्छी कहना सोसाइटी सेमती प्लस माइनस एक अच्छी मे भी आपण एबे केतेटा नेगेटिव लोक मान सहित इंटरेक्ट करिसेंती बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू पॉजिटिव ऑफिसर ट्रस्ट मी. ओके, तो नेक्स्ट टाइम जतबे आपण मानकर ट्रांसफर हेजिवो I will pray to God you are going to get officers who are really honest. Those officers are exist. चलो तापर कौन है ना comprehensive well-being भी है परिवो कहीं ना अपन मानकर peace रहिबो sustainable development अपन create करिवे जो भी अपन माने policy implement करिया पे जिबे you will think about कि inclusivity, social inclusivity, sustainability, environment protection केमती है परिवो. These are can only happen because कि अपन मानकर individual level ले ethics ता अपन मानकर अच्छी right. So this is how the ethics is going to be impact the peace. सब जिन को केमती पीस हे परिबो सोसाइटी रे बा वेलबीइंग केमती हे परिबो इंडिविजुअल लेवल रे राइट. तापर हमें देखिबा कि एथिक्स एज ए फाउंडेशन फॉर सोशल हार्मनी. तो एथिक्स गोटे होची दरकार अछि बिकॉज़ हमकु सोशल हार्मनी दरकार अछि. कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन फर्स्ट हला कोन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. एथिकल फ्रेमवर्क्स लाइक रोल्स विल ऑफ इग्नोरेंस प्रमोट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स reducing social tension जेमते कि मनरेगा ensuring equitable employment opportunities. एबे सब जगह एटा वीवीजी रामजी लिखिबो मनरेगा लिखले भी किछि प्रॉब्लम हबने बट फिर भी वीवीजी रामजी मींस मोर अप्रोप्रिएबल काहे कि ना चेंजेस जेतु हेछि वी शुड रेस्पेक्ट दैट राइट. तो से पेंका कोन करबो ना जो तुमर वेल ऑफ इग्नोरेंस से कोन कहितले कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हमें से जिंस भी कहउचंती जो भी जोटा ही अपन मानकर इंक्लूसिव ग्रोथ. Inclusive growth doesn't mean that कि समस्त growth करेगा. First of all, you have to give the equal opportunities to all the individuals. Along with that, you have to कौन करिबो ना जो भी अपन मानकर जो भी benefit होची that need to be fairly distributed among all. Understanding? So basically inclusive growth second है trust building हवा दरकार जेमते कि can't categorical imperative fosters reliability in social interaction essential for democratic institution and RTI act implementation. तो categorical imperatives आउ टिके आगुरु ही कहली previous question ले discussion कले which in past means is कि principle of universality that means कि all the principle protect the vulnerable. Yes, तो जो भी अपन मानकर प्रिंसिपल अछि honesty, integrity, truthfulness अपन मानकर हे गला impartiality हे गला this is going to be
universally applicable to every part of this world ताको हमें कहउछन्ती कि universality principle second जिंस से कहले कि reciprocity principle of reciprocity how you want to be treated first treat those people the way you wanted to be treated by them ओके तो जेमती तमे बिहेवियर एक्सपेक्ट करछो जेमती तमे सब जिंस एक्सपेक्ट करछो सेहि बली भाबर तमे फास्ट दबा स्टार्ट कर दे जो दिटा प्रिंसिपल संकर थिला तापर आसिला कोन कल्चरल इंटीग्रेशन तो गांधी जी सर्वोदय philosophy emphasizes collective welfare promoting unity in diversity as seen in the India's pluralistic society तो pluralistic जो आप माने कहउछन pluralistic माने कोन ना सबु धर्म सबु रिलीजन हे गेला सबु लिंग्विस्टिक हे गेला सबु एथनिक ग्रुप हे गेला सबु टाइप रो पॉपुलेशन हम कंट्री रे अछंती तो सेमानंकर बेटरमेंट पई का हमको कलेक्टिव वेलफेयर दरकार यूनिटी और डाइवर्सिटी प्रमोट होबा दरकार जेमती कि अपन प्लूरालिस्टिक सोसाइटी हे परिबो प्लूरलिज्म ओके गोटे नंबर अछि डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म तो देयर इज अ डिफरेंस डाइवर्सिटी माने कि हम जो सोसाइटी अछि they are different types of religion different linguistic basis हे गेला ethnic group हे गेला they are living in our society pluralism माने कोन when those type जो भी अपन मानकर कैटेगरी अछि जो भी अपन मानकर religion different अछि everybody is actively trying to protect it actively trying to coexist in a society without harming each other suppose कि सब टाइप रो सोसाइटी अछि सब टाइप रो रिलीजन अछि everybody is actively practicing that so that is why pluralism is आमे कहि परबे कि टिके ब्रॉडर हे जिवो डाइवर्सिटी माने जस्ट एक्जिस्टिंग व्हेन आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी आम कंट्री रे सब टाइप रो रिलीजन अछि लैंग्वेज अछि दैट इज डाइवर्सिटी प्लूरलिस्ट माने एवरीबॉडी इज एक्टिवली कि पार्टिसिपेट करछन कि हाउ टू कंजर्व दिस व्हाटएवर द यूनिक फीचर्स इंडिया गॉट राइट चलो तापर कोन देखिबा जस्टिस डिलीवरी भी हे परबो अरिस्टोटेलियन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंश्योर fair allocation of opportunity reflected in reservation policies प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ए सब जगह रे आपण जस्टिस को देखि चंती ट्राई करबे एग्जांपल को लिखिया पाए सोशियोलॉजी मैम कौन सोशियोलॉजी मैम ओके तापर कोन आसिले सोशल कोहेशन केमथि हबो ना अबुंटू फिलॉसफी कोन कहितले आई एम बिकॉज़ वी आर strengthen the community bonds similar to gram panchayat system promoting participatory governance जते लोक participate करिवे सेते अधिका governance better हबो institutional integrity ethical governance prevent corruption कोट ना कोठी हमरो corruption को prevent करिवो as demonstrated by E Sridhan transparent project management in Delhi metro construction तांको मैं Delhi metro man भी तांको कुआ जाय से बहुत द ट्रांसपेरेंट वे रे ए जिंस को करथिले प्लूरलिज्म सोशियोलॉजी अच्छा यस सोशियोलॉजी चलो तापर देखिबा एथिक्स केमती ह्यूमन डेवलपमेंट पाएगा भी हेल्पफुल हबो ह्यूमन डेवलपमेंट केमती हे परिबो डिग्निटी आपण मानकर डिग्निटी प्रिजर्वेशन हे परिबो तापर असला कैपेबिलिटी एनहांसमेंट हे परिबो मेंटल वेलबीइंग भी हे परिबो तो फास्ट होची कोन ना कंटिन्यूअस रेस्पेक्ट फॉर पर्सन्स प्रिंसिपल अंडरलाइन ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव तो सबले ट्राई करबो जो जिंस लेखुचो हमर गवर्नमेंट रे कोन अछि बा हम कंट्री रे ताको केमती जस्टिफाई करबो विथ वैल्यूएबल आपण माने केमती देई परिबे एग्जांपल्स कैपेबिलिटी एनहांसमेंट हे परिबो जेमती कि अमर्त्य सेंस कैपेबिलिटी एपाबिलिटी अप्रोच जोटा कि तमर थिला स्किल इंडिया मिशन करिया पयका लोक माने जेमती हम जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होउची समानको स्किल प्रोवाइड करबा मेंटल वेलबीइंग बुद्धिस्ट माइंडफुलनेस पतंजलि योगा तो तमरो कोट ना कोटी मेंटल वेलबीइंग करबो फिलॉसफी आउला आयुष्मान भारत मेंटल हेल्थ कंपोनेंट्स भी आपण मानकर अछि तो मेंटल हेल्थ को भी हमें बे प्रायोरिटी दोचंती कि मेंटल वेलबीइंग आल्सो रिक्वायर मोरल डेवलपमेंट हे परिबो कि नहीं यस मोरल डेवलपमेंट पाइका मु आपन को कहि छी कि जो मोरल प्रिंसिपल अछि बा मोरल जो साइंस अछि ताको स्कूल रे कोन कर दरकार पढाइबो दरकार पिला मानन को अछि एबे भी बट बहुत छोट पिला मानन को पढाउ छी बड़ पिला मानन को पाइका भी दरकार तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रे से जिंस इंप्लीमेंट करा हे छी तो कल्वर स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग गाइड ए जो जिंस अछि साइकोलॉजी रे जिंस पढा जाय नॉट रिक्वायर्ड न लिखबो जदी भी क्लास रे चलिबो तापरे कोन अछि एम्पावरमेंट अंबेडकर सोशल जस्टिस प्रिंसिपल जोटा कि कोन करछि जो भी मार्जिनलाइज रहिचंती एससी एसटी पॉपुलेशन अछि दलित रहिचंती सेमानंगर केमिति हमें कोन करबा ना तांकर अपलिफ्टमेंट करबा तापेगा स्टैंड ऑफ इंडिया बा एससी एसटी डेवलपमेंट स्कीम्स अछि
एनवायरमेंट स्टीवार्डनेस पाइका चिपको मूवमेंट हे गला स्वच्छ भारत मिशन हे गला पारिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हे गला एई सब जिंस को अपन माने कोन अछि ना इंडियन गवर्नमेंट रेक्टिफाई करूची और सेही हिसाब रे काम ही करूची लास्ट को हम लिखिबा कोन कंक्लूजन ethics create a virtuous cycle where individual moral development strengthen social institutions which in turn provide conducive environments for human flourishing exemplified by Scandinavian welfare model of and India's constitutional commitment to justice liberty equality and fraternity तो तुमको जब बेटर वे रे कंक्लूजन आसुचे लिखि पारिबो जेमती तुमको निजे निजे इनोवेटिव आइडिया रे हवा दरकार ठीक अछि पिला माने तो जदि क्लासेस भल लगुची जॉइन करंतु आपण मानकर तो एटा मोर कोड अछि ADC10 जदि आपण ए कोड यूज करछंती 10% डिस्काउंट मिलिबो थैंक यू एवरीवन हैव ए वेरी ग्रेट डे ओके चलो पुणी देखा जिवो नेक्स्ट वीक थैंक यू एवरीवन